Hey guys, welcome back to my channel. And as you guys already understood what we are going to do today, as Diwali is around the corner and we have to look good in this festival as well, isn't it? So today I'm going to share a makeup look that I normally use in various kind of festivals, as I personally do not use that much makeup products. So with least makeup products, today we will do our Diwali makeup look. So let us start the video. I am with bare face. I haven't even applied anything, just a moisturizer I have applied. Now let's start our makeup look. So guys, let us start our makeup, but before that let me tell you, I am not at all pro in makeup. That is why I do my makeup in such a with the help of such hacks and jugards. So maybe your makeup skills are better than me, so please don't judge. मुझे जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे ही मेकअप करती हूँ और मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करती. So let's start. First of all, as I have already applied moisturizer on my face, so as I don't like using foundations, I use this CC cream from Lakme 925 CC cream in the shade 03 Bronze. So let me take this much I have taken. I apply it as a cream only. I don't have makeup blenders also. Really, you will not believe. I don't have makeup blenders and brushes and all. But we can blend it well with our fingers, so I don't need any brush or blender. See, beautifully blended. So after using this, let us fill our brows. मेरा ना इस तरफ का ब्राउ थोड़ा मोटा है और इस तरफ थोड़ा छोटा है, तो first let me make them similar in look. I don't have any brow pencils or brow kits. I just take some kajal from my kajal, and ये वही ब्रश है जो हेलो किटी वाले ब्रशेज में मिलता है, बहुत ही छोटा सा. उसके सारे दूसरे ब्रशेस बहुत ही घटिया होते हैं. मैंने एक बार बस चेक करने के लिए लिया था, उसमें से मुझे बस यही ब्रश मिला जिसको मैं थोड़ा यूज़ कर सकती हूँ. बाकी सारे ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं. सो इधर मुझे टचअप करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. सॉरी फॉर द लाइटिंग इश्यू फ्रेंड्स, बिकॉज अभी मैं बस सनलाइट में ही वीडियो बना रही हूँ और इधर मेरी खिड़की है तो इधर से बहुत अच्छी लाइट आ रही है और ये साइड थोड़ा डार्क लग रहा है. ओके, now according to me my brows are done. मोटे मोटे ब्राउज इतना ही है और क्या करें. So after this what we will do, we will use a compact. So मैं तो वो लाना ही भूल गई. So guys, as a compact, मतलब आप हंसना नहीं, but I do use this my baby powder. मुझे ये बेबी पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं
इसी को यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। वो भी हाथों से। ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइस, पाउडर हमारा लग गया और ये अच्छे से अभी थोड़ा सेट भी हो गया। मेकअप क्या ही इतना मेकअप, सो सेट करने का भी उतना टेंशन है नहीं। सो नाउ एक बहुत ही मतलब मेकअप में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो है आईलाइनर। मैं हमेशा आईलाइनर लगाना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो लेट अस draw eyeliner on our eyes. I don't use eyeshadows normally, but today we will use. I have some jugaad for eyeshadow. That is my lipstick. With my lipstick, it is NY Bay lipstick. इसका शेड है शेड कहाँ पे है? मैट लिपस्टिक, बस इतना ही लिखा है इसमें। शेड नहीं लिखा। ओके, आई विल सर्च द शेड एंड आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। That is our eyeshadow. Now we will draw eyeliner on our eyes. So मैं यहाँ पे नीचे अपना आईना देख के कर लेती हूँ। Okay. So guys, this is the liner in one side. Let me draw in the other eye as well. So guys, my eyeliner is done in this eye and in this eye as well. So I have done my liners and now it's the time to wear little blush. मैं normally blush use नहीं करती हूँ, but today as we are doing our Diwali makeup, so इसमें थोड़ा सा blush तो होना ही चाहिए. And for blush, I'm going to do another jugaad just like my eyeshadow. Again, I'm going to use this lipstick. Take a little on your fingertip and smile. And then what you have to do to blend it well. पर पता है ये अच्छे से blend भी हो जाता है. तो ज़्यादा तो नहीं हो गया. इधर है ना, लाइट की वजह से आपको थोड़ा ऐसा कम कम दिख रहा होगा, पर दोनों तरफ सेम ही है. लेट मी सी इन द मिरर. मुझे सही सही दिखेगा. सही सही लगा है. बस
पर आपको इधर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इधर से लाइट नहीं आ रही और इधर थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट both are same. Okay, now about lipstick, and I'm going to use one of my favorite lipstick, that is from Wet n Wild Give Me Mocha, the nude kind of, the mauve kind of shade, and I like it so much. So this is the last step for our makeup. ड्रास्टिक मेकअप है मेरा, मतलब मेकअप लोग हंसेंगे मेरा मेकअप देख के. As I'm wearing a red dress, so red lipstick will not look good. That is why I'm wearing these nude kind of shade. So now about jewelry, as I'm not wearing any jewelry, our face makeup is done. Let us wear some jewelries. So guys, here I am with my final makeup look. I hope you all have liked this video and the way I do makeup, and I will show you from another angle also so that you will see it properly. And that's all. This is how I do my makeup as a untrained makeup artist. So these are the least makeup products I do use for my makeup, and that's the output. Hope you all have liked it. I will be back soon with another interesting video. Till then, be with my channel. Do subscribe it if you like my work. And till the next video, bye bye. Have a nice time and enjoy your festivals.